if there is an ADR, how we can report it and how we can fill that ADR form. So I would say there are no biologically safe drugs. There are biologically safe doctors, safe nurse, safe pharmacist. So ultimately, safety of the patient lies in our hands. Thank you very much. Okay, thank you. Welcome. Good afternoon, everyone. As you know that we are celebrating the National Pharmacovigilance Week from 17th up to 23rd September 2023. That's centered around the theme boosting public confidence in pharmacovigilance. So this is the theme for this Pharmacovigilance Week, and the topic that has been assigned to me for today's lecture is sensitization of adverse drug reaction reporting for the nurses and the paramedical students. So before going to the reporting of the adverse drug reactions, it is very important to know about the adverse drug reactions. What is the definition of adverse drug reactions? What are the types of adverse drug reaction? How you can detect ADRs, and then pharmacovigilance. So coming first to the ADRs. So what is the full form of ADR? ADR stands for adverse drug reactions. So what are the topics? What are the learning objectives in ADRs and pharmacovigilance? So I am going to cover under this. What is the definition of ADR? A brief history about the adverse drug reactions, classification of ADR, then some examples of ADRs, medication errors by the nursing and the paramedical students or healthcare professionals, you can say. What is pharmacovigilance? What are the aims and objectives of pharmacovigilance? How we can report an ADR, how to fill the ADR form, how we can submit the ADR form, and what are the advantages of pharmacovigilance. So coming first to the definition of adverse drug reaction. So adverse drug reaction, it is a response to a drug that is noxious, undesirable and unintended. Noxious is harmful, undesirable and unintendedly unexpected, and that occurs at the therapeutic doses used in humans for the prophylaxis, for the diagnosis or for the therapy of the disease, or for the treatment of the disease, or for the modification of the physiological functions. This it excludes therapeutic failure, overdose of the drug, poisoning, drug abuse, misuse of the drugs, overuse, non-compliance and medication errors. So adverse drug reaction क्या होती है? जब हम नॉर्मल कोई ड्रग यूज करते हैं, उससे जो कोई हार्मफुल, अनडिजायरेबल एंड अनएक्सपेक्टेड जो रिएक्शंस होती हैं, उसको हम बोलते हैं adverse drug reaction. So there is one more term, adverse drug event. Adverse drug event, it is any untoward medical occurrence that may be present during treatment with a pharmaceutical product, but which does not necessarily have a causal relationship with the treatment. So what is the difference between the adverse drug reaction and the adverse drug event? Adverse drug reaction has a relationship with the use of the medication, whereas adverse drug event, although it occurs after the intake of the drug, but it does not necessarily have any suspected this causal relationship with the intake of medicine. So adverse drug reactions
They are appreciable harmful reactions which results from the intake or intervention related to use of any medical product. Now, every this adverse drug reaction is an adverse event, but only some of the adverse event will be adverse drug reactions. Because adverse drug reactions, they are harmful and they have causal relationship with the intake of the medicinal product. Now coming to the importance of adverse drug reaction monitoring. Why the monitoring of these drug reaction is important? क्यों हमें adverse drug reaction monitoring करना पड़ती है? Why it is important? Because drug-induced diseases, they are common. The incidence is about 3 to 5% in the hospital admissions, and whenever there is an ADR, it increases the duration of stay in the hospital and the cost of the treatment. जब भी कोई ADR होती है, तो patient को और ज़्यादा hospital में रहना पड़ता है. So it increases the duration of stay in the hospital, and it also increases the cost of the treatment. Some examples of the adverse drug reactions which are reversible are, for example, visual disturbances can be seen with the use of ethambutol. So ethambutol and IMS, these are the two anti-tubercular drugs. Ethambutol and IMS, they are the anti-tubercular drugs, and these reaction visual disturbances can be seen with the use of ethambutol. And hepatotoxicity. Hepatotoxicity is when it involves the liver, toxicity of the liver due to isoniazid, again an anti-tubercular drug. They can be seen with the use of the anti-tubercular drug, but both these reactions, they are reversible. On decreasing the dose of the drug or when we stop the drug. Then bone marrow depression, again a reversible side effect which is dose dependent due to the intake of chloramphenicol. So these are some of the examples of reversible adverse drug reactions. Now coming to the brief history of the adverse drug reaction, Paracelsus, a founder of chemical therapeutics, 500 years ago stated a principle that all the things are poisons and there is nothing that is harmless. The dose alone decides that something is no poison. Means only the dose can decide whether drug is a drug or drug is a poison. For example, in case of paracetamol, अगर हम what is the dose of paracetamol? Normal dose कितनी होती है? 500 milligram. So we can give 500 milligram. कितनी बार दे सकते हैं हम? 6 orally दे सकते हैं. 500 milligram we can give 6 orally. अगर paracetamol ही हम उसको इतनी patient को दे दें, in high doses, excessive doses of the paracetamol it can act as a poison. So कोई भी drug है, for example diclofenac को हम use करते हैं पेन किलर में, अगर उसको बहुत ज़्यादा डोज में ले लें तो it can also act as a poison. अल्कोहल है, अल्कोहल जब पेशेंट लेता है तो थोड़ी डोज में लेगा तो ठीक है, इट्स ओके फाइन, बट अगर वही ज़्यादा डोज में लेगा तो it will act as a poison. So only the dose of the drug decides that whether the drug is a drug or drug is a poison. Then this is a brief about the history. That have you heard about the syphilis? Syphilis के बारे में कुछ सुना है? Syphilis क्या है? It is a sexually transmitted disease. This syphilis patients in 1922 they were treated with the use of salvarsin, which was an arsenical compound. Most of the patients they were jaundice at that time. Then in 1937 in USA, use of elixir that contained the solvent diethylene glycol, it caused the death of the 107 people. Then in 1938, FDA was established
And task was the FDA was given the task to inquire the safety of the drugs before marketing the drug into the market. Then in 1958, thalidomide was the drug which was marketed in West Germany and was used for the treatment of morning sickness during pregnancy. So 1958 में क्या हुआ कि thalidomide एक drug थी, उसको यूज करते थे नाजिया और वोमिटिंग जो होता है ना प्रेगनेंसी में, जो मॉर्निंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, उसके लिए जो हम थैलिडोमाइड यूज करते थे तब 1958 में, उससे क्या हुआ कि बेबीज जो बॉर्न हुए दे वर विदाउट लिम्स, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, दे वर विदाउट अपर लिम्स एंड विदाउट लोअर लिम्स. तो उस कंडीशन को बोलते थे फोकोमेलिया. तो थैलिडोमाइड, इसको हम उन्होंने नाम दिया थैलिडोमाइड डिजास्टर. They were using it normally for the treatment of morning sickness in pregnant patients. But later on, they found that there was an outbreak of focomelia in newborn babies. And I will show you here the picture of those babies. They were known as thalidomide babies, and the babies were without limbs. You can see they were without upper limbs. So thalidomide babies, they were without, so they are both the upper limbs and lower limbs, they were affected. Again, these are some of the pictures of thalidomide babies. So what happened? After that, it was made mandatory to for the safety of the patient that FDA was given the task to to see the toxicity of the drug before marketing the drug into the market. Then what is the classification of ADR, how they are classified? So according to the Wiesen-Blum classification, adverse drug reactions, they are classified into type A, type B, type C, type B and type E. Type A type of reactions, they are also known as augmented reactions. Augmented means they are dose dependent. So these they can be decreased. These reactions can be alleviated by the reduction of the dose of the drug. So here I will give you some examples of the type A adverse drug reactions, like anticoagulants. Anticoagulants क्या होते हैं? जो खून को पतला करते हैं, ब्लड थिनर जो होते हैं. तो they can cause, अगर हम excess dose में लेंगे तो they can cause bleeding. बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? बीटा ब्लॉकर्स को हम किसके लिए यूज करते हैं? There are so many indications of beta blockers, but mainly they are used for hypertension. They are used in patients of angina, myocardial infarction, cardiac failure. So excessive doses or high doses of the beta blockers can cause bradycardia. अगर ज़्यादा डोज दे देंगे तो ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? इंक्रीज इन द हार्ट रेट. जब हार्ट रेट एकदम ज़्यादा डोज लेंगे, ज़्यादा कम हो जाएगा तो पेशेंट कैन गो इनटू अरेस्ट. तो उसका हार्ट ब्लॉक हो सकता है. इट कैन ब्लॉक द हार्ट ऑफ द पेशेंट. देन नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स हम किसके लिए यूज करते हैं? एंजाइना पेशेंट्स में यूज करते हैं. तो नाइट्रेट्स अगर स्टार्टिंग में जब हम नाइट्रेट्स पेशेंट को देते हैं तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ये एक साइड इफेक्ट कॉज करता है हाइपोटेंशन. उससे क्या होता है? हेडेक होती है. तो हम अगर ज़्यादा डोज दे देंगे तो उसको ज़्यादा हाइपोटेंशन होगी, हेडेक होगी, पेशेंट कंप्लेन करेगा. बट धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो पेशेंट फिर यूज टू हो जाता है. और दिस इज नोन एज फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन. नाइट्रेट्स में हम पेशेंट को हमेशा एडवाइस करते हैं कि बेड टाइम लेना है ताकि पेशेंट को हाइपोटेंशन और हेडेक ना हो. Prazosin, again it can cause postural hypertension. Prazosin is an old drug. It is used for the treatment of hypertension as well as for the treatment of benign hypertrophy of the prostate. So these are the type A reactions, and these are dose dependent. We can alleviate the adverse drug reaction by decreasing the dose of the drug. Then type 2 reactions, they are also known as Desiree reactions, are idiosyncratic reactions, hypersensitivity reactions, or anaphylactic reactions. They
cannot be predicted from the pharmacology of the drug. They are not dose dependent. So अगर थोड़ा सा भी हम ड्रग देंगे हो सकता है फर्स्ट डोज से रिएक्शन हो जाए. Examples of these type B reactions are penicillin hypersensitivity reactions. So penicillin is one of the best examples of type B hypersensitivity reactions. Then anticonvulsants, the drugs which are used for the treatment of seizure disorders, again they can cause hypersensitivity reactions. So penicillin hypersensitivity reaction can present in the form of rash. Urticaria, it can present in the form of anaphylaxis. So whenever a patient presents with the anaphylaxis, because anaphylaxis is a severe type of hypersensitivity reaction and it can be fatal sometimes. Patient can die of severe hypersensitivity reaction due to the respiratory depression, cardiorespiratory failure. Then what is the difference between type A adverse drug reaction and type B adverse drug reaction? Nature of the ADR in case of type A adverse reaction, it is a normal response, it is augmented response and it depends upon the dose of the drug. When we increase the dose of the drug, the response goes on increasing. Type B it is abnormal disorder response, it does not depend upon the dose of the drug. Mechanism is hyper response is seen in case of type A reactions, whereas in case of type B, it is genetic in nature, immunological system is involved, or it can be due to unknown mechanisms. Pharmacologically predictable reactions, they are type A reactions. The type A reaction depends upon the dose, and we can decrease the incidence of reactions by decreasing the dose of the drug, whereas it is not dose dependent in case of type B reactions. Incidence and morbidity is very high in case of type A reactions, so it's very important. Mortality is mostly seen in case of type B reactions, and incidence and morbidity is very high in case of type A reactions. Then treatment for the type A reaction is we have to adjust the dose of the drug. If it is more, we have to decrease the dose or we have to decide the dose as per the need of the patient. And in case of type B reaction, because it is a form of severe hypersensitivity reaction, we have to stop the drug. Now coming to the type C reactions. Type C reactions, we are mainly seen with the use of continuous treatment. That is continuous use of the drug. It can lead to the type C reaction. For example, paracetamol is a drug which is very safe. Among all the analgesics, paracetamol is the safest drug. What is the dose? Normal dose of paracetamol? It is 500 milligram. We can use up to we can use 6 only, and for the treatment of osteoarthritis even we can use 1 gram 6 only. But paracetamol, when it is continuous intake of paracetamol, can cause hepatotoxicity, that is liver toxicity. Then glucocorticoids, these are the drugs, they are steroid in nature, and continuous use of glucocorticoid can cause hypoglycemia. Hypoglycemia is raised blood glucose level. So what happens when there is raised blood glucose level? It can cause diabetes. जब ज़्यादा होता है glucose level body में तो क्या होता है? Diabetes mellitus. So continuous use of glucocorticoid can lead to hypoglycemia and patient can develop diabetes mellitus. Neuroleptics, they can cause tardive dyskinesia. These are the abnormal movements. They are seen with the use of antipsychotics. Antipsychotics are neuroleptics. They are used for the treatment of psychosis. Then corticosteroids, long-term use, that is continuous use of corticosteroid. For example, जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड हम किस में देते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कई बार हमें बहुत देर तक देना पड़ती है.
तो what is the long term side effect of corticosteroid? It can affect the bone mineralization. तो क्या होता है, पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं। जब बोन्स वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाते हैं। सो लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस यूज ऑफ corticosteroid can derange the bone mineralization and it can cause osteoporosis and that can lead to the fracture of the bones. Then rofecoxib, this drug has been banned due to the cardiovascular events. Rofecoxib क्या था? It is a COX-2 inhibitors. ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में आता है एंड दिस rofecoxib it has been banned due to the कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। इससे क्या हुआ था, हार्ट को इन्वॉल्व करता है, तो उसकी वजह से ये बैन हो गया। नाउ कमिंग टू द टाइप डी आर डिलेड रिएक्शंस देते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स जो होते हैं हम किसमें देते हैं, व्हाट आर द इंडिकेशंस? जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में देते हैं, और किसमें देते हैं, और बड़ी सारी जो हमारी ऑटोइम्यून डिजीज लाइक रिमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं। तो अगर बड़ी देर तक पेशेंट लेता है तो इट कैन कॉज कार्सिनोजेनेसिस। तो कैंसर हो सकता है। म्यूटोजेनिसिटी, ये हमारे डीएनए में क्रोमोसोम्स में चेंजेस लाते हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं अगर बड़ी देर तक लिए जाए और पेशेंट प्रेग्नेंट हो तो इट कैन कॉज फ्रैक्टोजेनिसिटी, abnormal congenital malformation of the fetus can be there. So these are some of the examples of type B or delayed reactions. Then type B, end of the treatment are due to abrupt withdrawal. कुछ हमारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनको हम एकदम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेनिटाइन विथड्रॉल। फेनिटाइन कौन सी ड्रग है? इट इज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। इसको हम एपिलेप्सी के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको हम अगर सडन विथड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, अगेन द पेशेंट कैन प्रेजेंट विद द सीजर, जो कि पहले से ज्यादा हो सकते हैं। देन स्टेरॉइड विथड्रॉल। स्टेरॉइड्स का आपको पता है कि स्टेरॉइड्स कैसे लेते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लेने हैं तो आपको स्टेरॉइड स्टार्ट करने हैं, देन यू हैव टू डिक्रीज द डोज। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग 20 मिलीग्राम, फॉर एग्जांपल आई विल गिव वन एग्जांपल। अगर पेशेंट को बेल्स पैलिसी हो जाती है, इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, तो बेल्स पैलिसी में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं फॉर 3 वीक्स। तो फॉर एग्जांपल इफ वी स्टार्ट विद द 20 मिलीग्राम, देन वी गिव 20 मिलीग्राम फॉर 1 वीक, then we give 10 milligram for 1 week and then 5 milligram for 1 week. तो हम उनको आहिस्ता आहिस्ता टेपर करते हैं, क्योंकि सडन स्टेरॉइड विथड्रॉल कैन लीड टू adrenocortical insufficiency. Then beta blocker withdrawal again also can lead to worsening of angina. अगर फॉर एग्जांपल हमने एंजाइना के पेशेंट में हमने बीटा ब्लॉकर्स को डाला है, अगर हम उनका सडन विथड्रॉल करेंगे तो इट कैन एग्रीवेट द कंडीशन. So these are the reactions that can be seen with the abrupt withdrawal of the drug. Then what are the grades of adverse drug reactions based upon the severity? They can be mild, they can be moderate, they can be severe and they can be fatal. Mild कौन सी reactions होती हैं जिसमें there is no need of any intervention. थोड़ी सी वो होगी, फॉर एग्जांपल ड्राइनेस ऑफ माउथ होगी, कोई मेडिसिन होगी, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती आपको कम करने की डोज या कोई इंटरवेंशन करने की. मॉडरेट में इट नीड्स डिसकंटिन्यूएशन एंड चेंज ऑफ द ड्रग. इसमें जो मॉडरेट रिएक्शन होगा उसमें यू हैव टू एडजस्ट द डोज ऑफ द ड्रग. ईदर यू हैव टू एडजस्ट द डोज और यू नीड डिसकंटिन्यूएशन. सीवियर में इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग reaction, you have to stop the drug. And fatal to it can lead to the death of the patient. For example, penicillin anaphylaxis can cause death of the patient due to the cardiorespiratory failure. Then what are the serious adverse events? So serious adverse event हम reaction को कब बोलते हैं, जब any untoward medical occurrence that result in the death of the patient or is life threatening or it requires hospitalization of the patient or it causes persistent or significant disability
or if it can cause birth defect, or it requires medical intervention to prevent one of the above outcome. So all these comes under serious adverse events. Then these are the examples of some serious adverse drug reactions. For example, AC inhibitors. Have you heard about AC inhibitors? AC inhibitors जो drugs होती हैं like captopril, enalapril, lisinopril, कौन सी drugs हैं? Any idea? These are the anti-hypertensive drugs. Blood pressure को treat करने के लिए हम देते हैं. Sometimes these drugs can cause angioedema as a serious drug reaction. Angioedema क्या होता है? Edema of the upper respiratory passage. Larynx का edema, laryngeal edema होता है. तो patient can die of cardiorespiratory collapse. So AC inhibitors and angiotensin receptor blockers, they are the first line antihypertensive drugs, very commonly used in our setup, but sometimes these drugs can cause severe hypersensitivity reaction in the form of angioedema. Then proton pump inhibitors, esomeprazole, lansoprazole and omeprazole. Have you heard about this? Omeprazole, what is omeprazole? किसके लिए यूज करते हैं हम? Very good. For the treatment of acidity, for the treatment of peptic ulcer, gastroesophageal reflux disease, कोई भी GIT की disorder हो, उसमें हम यूज करते हैं. तो omeprazole जो है, omeprazole कितना commonly यूज होती है? Every time you are using OC, every time you are using Pantop, हर किसी के घर में ये यूज होता है OC, Pantop. लेकिन अब जो recently जो reports आए हैं, they have shown us that these proton pump inhibitors, they can change the bone mineralization, they can affect the bones of the person and they can cause bone fractures. So आप लोगों ने घर में ये सबको बोलना है कि don't take TPIs, they are only taken whenever they are required. ऐसे नहीं कि जब भी लोगों को तो हमारे हैबिट हो गई है कि सुबह उठे मॉर्निंग में पेंटॉप लेना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक पेंटॉप डेली. कुछ लोग तो 10-15 सालों से ले रहे हैं, 20 सालों से ले रहे हैं, जो उससे खाना है पेंटॉप खाना है. बट रिसेंटली in the research we have seen that these drugs can cause bone fractures by altering the bone mineralization. Then non-steroidal anti-inflammatory drugs like ibuprofen, naproxen, they are commonly used analgesics. Diclofenac कितना यूज होता है पेन किलर, लेकिन sometimes this diclofenac can cause kidney damage. So this can be a severe adverse drug reaction. Patient can land into renal failure. Some analgesics like acetaminophen, it is a paracetamol, it is the safest drug among analgesics, but excessive doses sometimes can cause hepatic damage or liver damage. Then similarly, non-steroidal anti-inflammatory drugs, anticoagulants, bisphosphonates, these are the drugs used for the treatment of osteoporosis. They can cause gastrointestinal ulcers. तो non-steroidal anti-inflammatory पेन किलर जो होते हैं, corticosteroids जो होते हैं, bisphosphonates हम क्यों नहीं ज़्यादा prescribe करते हैं पेशेंट को, क्योंकि they can cause damage to the stomach mucosa. GIT को इफेक्ट करते हैं, अल्सर कर सकते हैं and they can cause bleeding. So these are the examples of serious adverse drug reactions. Now coming to the some of the examples of adverse drug reactions, like you can see here the sulfonamide allergy. So this is the image showing the sulfonamide allergy. Sulfonamides, they are क्या होते हैं sulfonamides? They belong to which group of drugs? They are antimicrobials. They are used for the treatment of various infections. जैसे कोट्राइमेक्साजोल होता था, सेप्ट्रान हम यूज करते थे, आजकल फिर दोबारा उसका यूज आ रहा है कोट्राइमेक्साजोल का. So sulfonamides, they are known for their hypersensitivity reactions. So this is the image showing
the sulfonamide allergy. Then this is the penicillin hyperurticarium, it can lead to anaphylaxis. And what is the drug of choice for anaphylaxis? It is adrenaline. Adrenaline is the drug of choice in anaphylaxis. So these are the examples of penicillin hypersensitivity. You can see the rash, you can see urticaria, and you can see the swelling of the eyelids, lower eyelid. छोटी स्क्रीन में ज़्यादा सही दिखता है. Again, this is a hypersensitivity reaction due to penicillin. You can see the swelling of the lips. And whenever there is anaphylaxis, patient can die of because of the laryngeal edema, angioedema, and because of the this cardiorespiratory collapse. So what happens in penicillin anaphylaxis? There is patient can present first with a rash, with urticaria. Then there is rapid swelling of the throat tissue. Then there is swelling of the tongue, inability to swallow anything. You can see here the laryngeal edema. Then there can be loss of consciousness, and patient can die of respiratory paralysis and cardiorespiratory collapse. This is the discoloration after this is adverse drug reaction due to the use of tetracycline. So tetracycline is again an antimicrobial, not used these days. Instead of tetracycline now we are using doxycycline. But this is the adverse drug reaction. There are still indications of tetracyclines, and this discoloration of the teeth is because of the use of tetracycline. So this is the adverse drug reaction of tetracycline. You can see this is the bisphosphonate induced necrosis after. Although it's a very rare this adverse drug reaction, very rarely seen, but in some patients you can see bisphosphonates induced osteonecrosis of the jaw. So it can cause bisphosphonates which are used for the treatment of weak bones. They can cause necrosis of the bone, of the jaw. So necrosis of the jaw bone is one of the side effects, which is a very rare side effect of bisphosphonates, but it can be seen with the use of bisphosphonates. Then you can see this is the image showing the corticosteroid induced osteoporosis and fracture. So you can see this is the normal bone. This one is the normal bone. This is the osteoporotic bone. And in the center you can see the fracture, and on that image again you can see the compressed vertebral fracture. So here in this case the corticosteroids, they have weakened the bone, and now the patient has fracture in the vertebral column. So in the vertebral bones they are fractured. So you can see the two fractures in the central image, as well as on that side you can see the compressed vertebral fracture, and that is due to the corticosteroid induced osteoporosis. So long-term use of corticosteroid can cause osteoporosis, and that can lead to the fracture of the bones. So what are the commonest bones that are involved? They are the wrist bones, vertebral bones. These are the common involved, and pelvic bones. Then this is a side effect of antipsychotics. This is a patient I am sharing my own experience. एक पेशेंट था, उसको पेशेंट को एंटीसाइकोटिक पे डाला था, एंड पेशेंट ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे स्ट्रोक हो गया. पेशेंट के अटेंडेंट ने फ़ोन किया कि मुझे स्ट्रोक हो गया. तो मैंने उनको बोला कि स्ट्रोक कैसे हो गया. तो ही सेड कि अटेंडेंट ने बोला कि पेशेंट को एक तो उसका जॉ नहीं खुल रहा है, और दूसरा वो थोड़ा अनकॉन्शियस फील कर रहा है. तो आई सेड कि इज शी टेकिंग एनी ट्रीटमेंट. ही सेड कि हाँ, अभी हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कुछ एंटीसाइकोटिक्स दिए, एंटीसाइकोटिक्स और एंटी डिप्रेसेंट्स कुछ दिए.
So I said कि send me the prescription of the doctor as well as the these strips of the this drugs. तो उन्होंने जब मुझे भेजी तो I saw the dose of the drug which the doctor has prescribed. It was 0.25 milligram, and the chemist has prescribed 2.5 milligram. So it was 10 times higher than the normal dose which the doctor had prescribed. So 0.25 कहाँ आ गई और 2.5 कहाँ आ गई, और वो भी एंटीसाइकोटिक. तो पेशेंट को उससे क्या हो गया था, लॉक जा हो जाता है उससे. जब भी एंटीसाइकोटिक्स हम हाई डोजेस में लेते हैं तो दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, दैट इट कॉजेज इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. तो जो हमारे ये मसल्स ऑफ द फेस होते हैं, स्पेशली इन द मैंडिबल दिस बोन, उनकी कंट्रैक्शन, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होती हैं. दीज आर नोन एज डिस्टोनियास. तो दीज आर द एंटीसाइकोटिक इंड्यूस्ड डिस्टोनियास. उससे क्या होता है कि जॉ लॉक जा हो जाता है, मुंह पेशेंट खोल नहीं सकता है. सो यू कैन सी इन द पिक्चर पेशेंट इज अनेबल टू ओपन द जॉ. So these are the, this is because of the spasmodic involuntary contractions of the jaw due to the excessive dose of antipsychotics. So doctor ने तो prescribe की है 0.25 milligram, but chemist has given 2.5. अब patient is not knowing कि whether it is 0.25 or 2.5, वो तो chemist ने देखना है ना कि कितनी डॉक्टर ने prescribe की है. So this is the prescribing error. डॉक्टर ने तो ठीक प्रेस्क्राइब की, लेकिन ये केमिस्ट की तरफ से मिस्टेक थी जिसकी वजह से पेशेंट को लॉक जॉ हो गया. फिर पेशेंट को बुलाया, यहाँ पे देखा कि तो मैं व्हेन आई सॉ दिस के द डोज व्हिच द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड इट इज 0.25 मिलीग्राम, बट केमिस्ट हैज गिवन 2. दिस इज अगेन माय पर्सनल एक्सपीरियंस. डिक्लोफेनाक इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन हुआ है. यू कैन सी दिस इज द पेशेंट जिसने डिक्लोफेनाक इंजेक्शन लिया था. एंड इसमें आई विल टेल यू द डिटेल हिस्ट्री. हम इनके घर में एक्चुअली मैरिज में गए थे. ही इज अ फार्मासिस्ट बाय ऑक्यूपेशन. तो इसने मुझे वहाँ पे मुझे शादी में मिला. तो ही सेड कि डॉक्टर साहब मुझे ना कुछ थोड़ा सा ना रैश जैसा हो गया. मैंने कहा शो मी. तो इसने मुझे बताया, तो मैंने आई सेड के कहता मुझे फीवर भी है और मुझे रैश भी हो गया है थोड़ा सा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है. मुझे आई हैव सीवियर बॉडी एक्स, माइल्जिया है मुझे बहुत ज़्यादा. तो आई सेड के गो फॉर द प्लेटलेट काउंट एंड डेंगू टेस्ट. आपको शायद प्लेटलेट काउंट डाउन होगा तभी आपको हेमरेजिक स्पॉट्स आए. ये सेड कि नहीं, अभी तो मैं 1-2 दिन शादी चल रही है, मैं देखता हूँ, उसके बाद अगर ठीक होता तो ठीक है. मैं अभी आई एम टेकिंग डिक्लोफेनाक पेरेंटल रूट, मतलब इंजेक्टेबल डिक्लोफेनाक ले रहा. तो थर्ड डे अगेन उसने मुझे कॉल किया कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, फीट पे हो गई है और लेग्स पे हो गई है. तो मैंने बोला कि आप अपना RFT कराओ. तो अल्टीमेटली द पेशेंट लैंडेड इनटू रीनल फेलियर. तो डाइक्लोफेनाक से पहले रिएक्शन हुआ. पेशेंट वाज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर. डेंगू वाज पॉजिटिव, प्लेटलेट काउंट वाज लो, डेंगू वाज पॉजिटिव एंड RFT वर रेज्ड. यूरिया वाज हाई, creatinine was I think 6. So then I reported this ADR to our adverse drug monitoring center also, and this was the case with the diclofenac injection. So see, diclofenac is very commonly used, but sometimes any injection, any drug, even tablets, they can cause severe hypersensitivity reaction. Again, this is my personal experience. एक पेशेंट मेरे पास आता है, एक लड़की, वो दे सेड के उनके अटेंडेंस आते तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बेटी को ना अपरोलिंग ऑफ द आईबॉल्स हो रहा है. तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ है, व्हाट इज द रीजन. वो कहते अब हमारे आपको पता ही है कि हमारे लोग बोलते हैं कि बाहर का कुछ हो गया है, बच्चा आईबॉल रोल कर रहा है, ऊपर नीचे से वाइट दिख रहा है. तो मैंने उनको आई टुक द हिस्ट्री. मैंने उनको बोला कि हिस्ट्री टेकिंग एनी ट्रीटमेंट, बिकॉज वो लड़की थोड़ी सी टाइप ए पर्सनैलिटी थी. शी वॉज द टॉपर ऑफ हर स्कूल और उसकी 10th पोजीशन आई थी 10th में. तो बड़ी टाइप ए पर्सनैलिटी, थोड़ा था कि मुझे आई वांट टू डू IAS ऑल दैट.
थोड़ा सा उसको वो हाइपर जैसी थी, तो उसको डॉक्टर ने डाला था एंटी डिप्रेसेंट्स पे। तो हाई डोजेज ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट्स कैन कॉज दिस अपरोलिंग ऑफ द आईबोल्स, सो दिस इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स। जब मैंने उनको पूछा कि इज शी टेकिंग एनी ट्रीटमेंट, उन्होंने बोला हाँ हम साइकेट्रिस्ट के पास गए थे, उन्होंने हमको 2-3 दवाइयाँ डाली हैं। तो देन आई टोल्ड देम दैट शो मी द मेडिसिन्स, तो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं यही, बिकॉज आई वाज नोइंग द साइड इफेक्ट्स। तो मैंने उनको बोला ये आपको इसकी वजह से हुआ है और कुछ नहीं है, स्टॉप द ड्रग एंड अगेन कंसल्ट योर डॉक्टर। सो फिर उसके बाद पेशेंट की जाने के बाद शी वाज ओके। सो दिस इज अगेन द एंटी डिप्रेसेंट इंड्यूस्ड adverse drug reaction. Now what are the these are all the examples of these adverse drug reactions. Now the medication errors by the healthcare professional which you can avoid, especially as my topic was for ADR reporting for nurses and paramedical students. So first of all you should know what are the medical errors that you can avoid. तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट पेशेंट, तो आपने सबसे पहले देखना है कि अगर डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब द मेडिसिन, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पेशेंट फर्स्ट कि कौन से पेशेंट को लिखी है। आपने नाम पूछना है, कौन सा पेशेंट है, एज क्या है प्रॉपरली, बिकॉज एक बार क्या हुआ कि जब मैं आई वाज डूइंग माय MBBS, तो हमारी पोस्टिंग हुई थी SMGS हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे हम मैटरनिटी उसमें थे, तो वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जो पेशेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कि वॉक करो आप। तो एक पेशेंट वॉक कर रहा था, तो उसका अटेंडेंट सोया था, तो सिस्टर आई तो उन्होंने फटाफट इंजेक्शन भरा, तो उसको अटेंडेंट को लगा दिया इंजेक्शन। तो पेशेंट वाज रूमिंग हियर एंड देयर और शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि मैं अटेंडेंट हूँ, मैं उसके साथ आई हूँ, बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट पेशेंट। तो आपको सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन देखनी है, पहले पेशेंट का नाम देखना है, आइडेंटिफाई करना है ये वाला पेशेंट है। राहुल सेकंड इज इनकरेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, so you can avoid the incorrect patient, you can avoid the incorrect route of administration. For example, अगर आपने IM इंजेक्शन देना है, आप IV दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिक्लोफेनाक इंजेक्शन होता है, उसको हम मोस्टली कैसे देते हैं, बाय विच रूट, IM देते हैं। अब आजकल जो है IV preparations they are also available, but mostly हम IM देते हैं, and IM preparations they are IV in nature because they can cause these IV preparation whenever we give by the IV route they can cause embolism and patient can die immediately. So आपको याद होगा जो सीनियर सिस्टर, आई डोंट नो व्हेन आई वाज डूइंग माय MBBS, यहाँ पे एक पेशेंट ने लिया था, आई थिंक शी वाज नर्स, इमरजेंसी में हुआ था कुछ, शी वाज सफरिंग फ्रॉम कुछ डिस्मेनोरिया, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा पेन एब्डोमेन हुआ था उनको। तो शी सेड दूसरी सिस्टर को कहा कि मुझे आप इंजेक्शन लगा दो, तो शी वाज बिजी विद द पेशेंट्स, तो उन्होंने खुद ही लगा दिया, तो शी डाइड इमीडिएटली आफ्टर इनटेक ऑफ दिस, उन्होंने खुद ही लगाया तो उसी टाइम कोलैप्स कर गई। तो इनकरेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो यू हैव टू सी फर्स्ट वेदर द ड्रग इज टू बी गिवन बाय द IM रूट और IV रूट, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकरेक्ट ड्रग। आपने देखना है अच्छी तरह से कि ड्रग आपने जो डॉक्टर ने लिखा है वही हम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ड्रग्स की कंफ्यूजन होती है, जैसे मेट्रोनिडाजोल है, मिटोक्लोप्रामाइड है, एक जैसे ड्रग्स होते हैं, नाम एक जैसे होते हैं, बट उनकी इंडिकेशंस अलग अलग होती हैं। रॉन्ग डोज प्रेपरेशंस, आपने जैसे डोज, जब फॉर एग्जांपल आपने डोज कितनी लेनी है, जैसे सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि 0.25 का 2.5, सो रॉन्ग डोज यू कैन प्रिवेंट दिस साइड इफेक्ट आल्सो बाय अवॉइडिंग द रॉन्ग डोज। रॉन्ग टाइमिंग, अगर आपको 3 बार मेडिसिन देनी है तो आपको यू हैव टू गिव इट 8 आवर्ली, लेकिन अगर आप कम दोगे तो इफेक्ट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द ड्रग। सो यू हैव टू टेक फर्स्ट द हिस्ट्री ऑफ ड्रग एलर्जी। जब भी आपने इंजेक्शन लगाना है, अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, डॉक्टर ने ली है हिस्ट्री, तब भी आपने पूछना है कि कोई आपको एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है, whether the patient needs sensitivity testing or not। कई बार कोई ड्रग्स होते हैं जिनको हम सेंसिटिविटी टेस्टिंग के बाद देते हैं, जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसमें पेनिसिलिन आता है, सेफ्ट्राइक्सोन आता है,
इनको हम हमेशा सेफ्ट्राक्सोन तो आजकल इधर नहीं देते हैं सेंसिटिविटी टेस्टिंग के बाद, बट सेफ्ट्राक्सोन अगेन इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप to which the penicillin belongs. Sometimes it can also cause a hypersensitivity reactions. एक हमारा पेशेंट SMGS में एक्सपायर हो गया था because of the injection ceftriaxone. The MN disease, renal or hepatic, you have to inquire before giving any drug. Expiry medicine, you have to look for the expiry medicine also. High alert medications, you have to double check the high alert medications. हाई अलर्ट मेडिकेशंस कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस में जब आप इंसुलिन देते हो, इंसुलिन अगर आपने उसमें पूरी जितनी डोज लिखी है डॉक्टर ने, आपने उतनी दी है, तो थोड़ी भी डोज वो हो गई तो इट कैन कॉज हाइपोग्लाइसेमिया एंड पेशेंट कैन डाई. देन जैसे ओपियाइड्स हो गए, ओपियाइड्स क्या है? एनाल्जेसिक्स हैं, बट दे कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. सो अगर उसकी डोज ज़्यादा हो गई तो इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. Then correct dose. So you have to give the dose according to the need of the patient. So these are the medication errors that can be avoided by the healthcare professionals. Then what is pharmacovigilance? So errors को कम करने के लिए there is a science known as pharmacovigilance. Pharma means medicinal substances. Vigilia means to keep watch. To keep watch on the medicinal substances. So what is the WHO definition of pharmacovigilance? The science and activities relating to the detection, assessment, understanding and prevention of the adverse effects